پہلا کوشچن ہے جی دا برٹش انڈین گورنمنٹ اناؤنس دا پارٹیشن آف بنگال ان 1905 بیکاز آف جس کا رائٹ آنسر چارلی ہے ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس. سیکنڈ کوشچن قائد اعظم ریزائن فرام انڈین نیشنل کانگریس ڈیو ٹو نان کوآپریشن موومنٹ. کوشچن نمبر 3 کی طرف which of the following leader has convinced قائد اعظم to join All India Muslim League تو مولانا محمد علی جوہر. Pakistan national movement was launched from England in 1933 by Chaudhry Khalilur Zaman. The central part of Government of India Act 1935 was not enforced because of required number of princely states declined to join the Indian Union. The founder of Indian National Congress was A. O. Hume. Question 7. The largest princely state area at the time of partition was Kashmir. The Central National Mohammedan Association was founded in 1877 by Sayyid Amir Ali. Question number 9 है The Constitution of All India Muslim League was drafted by a committee in 1907 headed by Maulana Muhammad Ali Johar. Which amendments were proposed by Qaid Azam in Nehru report in 1928 to make it acceptable to Indian Muslims? اس میں یہ سارے آپشن ہیں اس کا آنسر ہوگا ڈیلٹا. Question number 11 Maulana Muhammad Ali Johar had started publishing his famous English newspaper Comrade in 1911 from Bombay. Question number 12 Liaquat Ali Khan joined All India Muslim League as member in 1923. Question number 13 What was the significance of 21st annual session of All India Muslim League? اس کا آنسر ہوگا بیٹا. علامہ اقبال delivered Allahabad address. Question number 14 Which of the leaders helped Qaid Azam in preparation of 14 points in 1929? مولانا محمد علی جوہر. Question number 15 ہے Under Gandhi's Irving Pact March 1931, it was decided that the Congress will call off its civil disobedience movement. Question number 16 है The Government of India Act 1935 divided the country into 11 provinces. Question number 17 है In the provisional election of 1937, All India Muslim League won largest number of seats in the United Provinces. Question number 18 है The Indian Muslim observed Day of Deliverance after the resignation of Congress Minister. इसका आंसर डेल्टा है 22 December 1939. 19 है Chaudhry Rahmat Ali first used the word Pakistan in his pamphlet No or Never in 1933. Question number 20 है Identify the Secretary of State of India who led the Cabinet Mission in 1946, Lord Patrick Lawrence. Question number 21. Mohtamma Fatima Jinnah joined All India Muslim League in 1937. Question number 22. Lahore Resolution of 23rd March 1940 was scanted from province by Abdullah Haroun. Question number 23. Question number 23. Congress launched Quit India movement against the British government in 1942. Question number 24. Gandhi's Jinnah talks were held in 1944 to discuss the CR formula prepared by Raj Gopal Acharya. Question number 25.
Question number 25. Who presided over the Shimla Conference in 1945? इसका आंसर होगा बीटा लॉर्ड वेवल. Question number 26. After Sir Aga Khan, the next president of All India Muslim League was Raja Sahib of Mahmudabad. Question number 27. Question number 27. And the Hindu had launched Swadeshi movement to boycott English-made goods in the wake of partition of Bengal 1905. The Pirpur report on the violence of Congress ministries in 1937 was compiled by Raja Muhammad Mehdi. Question number 29. The British Parliament passed Indian Act on 14 July 1947. Question number 30. Who among following leader had translated the Lahore Resolution from English to Urdu on 23rd March 1940? Maulana Zafar Ali Khan. Question number 31. Question number 31. Quaid-e-Azam met M.K. Gandhi for the first time 1916 at Lucknow. Question number 32. Identify the viceroy who made August offer in 1940, Lord Linlithgow. Question number 33. 33. Kanpur mass tragedy had taken place in 1913. Question number 34. Quaid-e-Azam surrendered most cherished demand of Indian Muslims separate electorate system under the Delhi Proposal 1927. Quaid-e-Azam joined All India Muslim League as a member in 1933 at Bombay. Question number 36. The Politics is considered as the first book on the art of government. Identify the author. Aristotle. Question 37. Thomas Cup is given for the game of badminton. Question number 38. The Nobel Prize for Peace is given in the city of Oslo. Question number 39. Which is the largest gland in human body? That is liver. Question number 40. Who is the founder of Scout movement? Robert Baden-Powell. Question number 41. Question number 41 had the first Pakistani who became the judge of International Court of Justice was Sir Zafrullah Khan. Question number 42. The UN Secretary Council consists of 15 members. Question number 43. The Suez Canal connects Mediterranean Sea and Red Sea. Question number 44. Pakistan has recently been elected non-permanent member of United Nations Security Council for the 7th time. Question number 45. What do you understand by the term carib in foreign currency dealings? इसका आंसर अल्फा है, the exchange rate of currencies in the open market. Question number 46. Itar Das is a new agency of Russia. Question number 47. Ariana is an airline of Afghanistan. Question number 48. Pakistan's highest mountain peak K2 is located in the Karakoram range. Question number 49. Identify the highest non-operational award, that is Sitara Basalat. Question number 50. The study of science of populations is called demography. Question 51. According to the recent report, the World Health Organization, which infectious disease is caused the maximum number of casualties in the world, that is SARS, जो कि coronavirus है. The world's oldest surviving kingdom is in Saudi Arabia. Question 3. OPEC's largest oil producing country is Saudi Arabia. Question number 54. Pedagogy is a science of teaching. Question number 55. The main causes of earthquake ये सारे ही हैं: sudden cooling and contraction of the earth's surface, coming into activity of some dormant volcanoes. Due to internal heat, sometimes water changes into steam and expands. तो इसका आंसर होगा डेल्टा ऑल ऑफ अबव. Question number 56.
After USA, which country is the second biggest arms seller in the world? That is Russia. 57. Digital computer was invented by Howard Aiken. Question number 58. Pinpoint the world's oldest democratic country. That is Great Britain. Question 59. The highest literacy rate among the SAARC countries is in Maldives. Question number 60. Foreign exchange reserves helps क्वेश्चन इसका आंसर है चार्ली टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दोज कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 60 का जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं थी, तो मेरे ख्याल से इसी बनती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्प्स टू, तो ये थोड़ा सा कंफर्म करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज Greenland. Question number 62. Among the SAARC countries, the highest per capita income is of Sri Lanka. Question number 63 है which international agency supervised the Indus Basin Treaty 1960 between Pakistan and India? World Bank. Question number 64. Identify the longest glaciers of Pakistan. That are Siachen. Question number 65. Versak Dam has been built on the river of Kabul. Question number 66. The Shandur Pass at the highest of 12 to 05 feet connects Chitral and Gilgit. Question number 67. According to the recent survey, the world's that is on China recently published book is written by Henry. क्वेश्चन नंबर 71 है कुरान मजीद की किस सूरत में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा अहकामात आए हैं? सूरह अल इमरान। क्वेश्चन नंबर 72 कुरान मजीद में सबसे पहले नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? तो वो सूरह फातिहा है। क्वेश्चन नंबर 73 हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया तबलीग इस्लाम के दौरान तहरीक इस्लाम का मरकज़ किसका घर था? हज़रत अरकम मखज़ूमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि। क्वेश्चन नंबर 74 बैतुल उक़बा सानिया में कितने अफराद शामिल थे? तो इसमें 12 अफराद शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 75 कुरान मजीद में किस सहाबी रसूल का नाम आया था? तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आया है। क्वेश्चन नंबर 76 मिसाक मदीना की खिलाफ वर्जी सबसे पहले यहूदियों के किस कबीले ने की? तो बनु कुनैका। बीटा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 77 है कुरान मजीद की आखिरी वही के कातिब कौन थे? तो हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। क्वेश्चन नंबर 78 कुरान मजीद में अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें मौजूद हैं? तो 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 79 मुसलमानों ने पहली बहरी जंग किस खलीफा राशिद के दौर में लड़ी? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 80 है गज़वा मोता किस सन हिजरी में हुई? तो ये 8 हिजरी में हुई। है वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन थी जो सखावत और फयाज़ी की वजह से उम्मुल मसाकीन के लक़ब से मशहूर थी? तो हज़रत ज़ैनब बिन खासिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 82 है ज़कात की फर्जियत के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात, सदक़ात और जज़िया इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी किसके सुपुर्द की? तो वो थे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 83 मंदरजा ज़ैल में से कौन से सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरा मुबश्शरा में शामिल हैं? वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कुरान मजीद में किस नबी का सबसे ज्यादा तज़किरा किया गया है? तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। क्वेश्चन नंबर 85 है अल्लाह ताला का सिफाती नाम अल-बारी किस सिफत को ज़ाहिर करता है? इसका आंसर अल्फा है, हर चीज को अदम से वजूद में लाने वाला। क्वेश्चन नंबर 86 है इसराइल किस पैगंबर का लक़ब है? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। क्वेश्चन नंबर 87 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गज़वा में शिरकत की? तो गज़वा बुआ है। क्वेश्चन इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 88 सन 4 हिजरी
میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟ ان صحابی کا نام ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ کویشچن نمبر 89، قرآن مجید کو 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کویشچن نمبر 90، اسلام کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ سریہ محمد بن مسلمہ۔ اس کا آنسر سی ہے۔ کویشچن 91، اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ وہ 6 دفعہ آتے ہیں۔ کویشچن نمبر 92، نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ کویشچن نمبر 93، قرآن پاک میں کس چیز کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ شرک کو۔ کویشچن نمبر 94، طواف قدوم کیا ہے؟ بیت اللہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف۔ کویشچن نمبر 95 ہے، صلاۃ کسوف کب ادا کی جاتی ہے؟ تو یہ چاند گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ کویشچن نمبر 96 ہے، مذہب کے معنی کیا ہیں؟ چلنے کا راستہ۔ کویشچن نمبر 97 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ وہ انبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ سچا امانت دار آدمی۔ کویشچن نمبر 98، سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہیں؟ تو وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کویشچن نمبر 99 ہے، قریش نے کتنے عرصے تک بنو ہاشم کا معاشی مکاتہ کیا؟ تو اس کا عرصہ 3 سال کا تھا۔ کویشچن نمبر 100، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ تو وہ دن بدھ کا ہوتا تھا، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ تو یہ تھے کینڈیڈیٹس 100 MCQs جو ہم نے ضلع دار کینڈیڈیٹس کے لیے یہ ہم نے ریکارڈ کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔